Uh, so how do you see a very dreaded terror attack has happened in Pahalgam and approximately 26 civilians have lost their lives, and how do you see it? I am deeply concerned at the state of our country. Firstly, I feel terrible, and my deep hearted condolences are for the 28 people who have died in this terrorist act, and a number of people have gotten injured. And definitely, my deep hearted condolences to the family who've lost their loved ones. And I would say that I do wish to say that the people who have gotten injured, I hope they recover at the earliest. Terrorist acts are really a weak way of highlighting their cause, is what I feel. This doesn't highlight a cause, it only makes the people who use these acts on civilians and people who are just there for tourists, it's a weak act. I think surely it is a time that all governments need to come together to fight this kind of an act or this kind of organizations. But I have another thought in this also. This is my thought. This is not a thought that the Congress or my family's thought. You know, in our country, we see that this government will try and show that, talk about Hindutva, and, the minorities feel uncomfortable, and, they feel troubled when you have a survey on, mosques, or you tell people you cannot pray in this way or that way. These kind of things create instability, communal issues. And if you see the way this act, if you dissect this terrorist act that took place, if they're looking at people's identity, why are they looking at people's identity? Because there's a divide that has come about in our country with Hindus and Muslims and also Christians. On Easter, I saw video footage of churches being burnt, priests being troubled. What is this? Why are we having, communal disharmony in our country? This will create divides. This will create these kind of organizations to feel that Hindus are making a problem for all the Muslims. We don't need that. You ask many Hindus and Muslims together, they help each other. In COVID, we saw they help each other. They don't understand all these political ways of, trying to infuse some, or win elections or infuse some kind of disorder in people. Looking at identities and then killing somebody, that's a message. Also sending a message to the Prime Minister of our country. Why? Because Muslims are feeling weakened. The minorities are feeling weakened. I know that 2 weeks before I was summoned by the ED, I talked for the minorities. I said that, when you're going to stop minorities or Muslims from basically saying their prayers on spilling over from their mosque to the road, or on roofs of their homes, or you have a survey of the mosques that, there's a temple under that, or there's a statue under that, or you tell them that Babar and Aurangzeb, negative thoughts about that. Yes, there'll be a divide, and people will not appreciate that in our country, and communal disharmony will create this. And I totally feel that this act is wrong. I condemn it, and I feel that whatever their cause is, this is the weakest way of, uprising your cause. So I feel that innocent people are dead. I feel really terrible for the families. Internationally also, people are looking at this. And even overseas, when you see terrorism only creates fear, and it doesn't create, progress. But if people unite and stick together, forget about, because terrorism
doesn't really see religion. Is what I mean, I've told. But in this case, I feel that the way they filtered or selected people who they killed was very candid and clear. So I feel that being secular in our country is the key of progress, unity, and for us to be united and strong is the only way the next generations will want to stay in our country, there'll be brotherhood, and I feel it only comes from, a misuse in politics where religion is concerned and all that. That's why religion and politics should be separate, and do not use it, because this will only cause more and more cases as such, which is harmful for every religion, every person, and we all are, everybody's focus is on Kashmir today. Kashmir is a beautiful place in our country. People were going there as tourists. This is the season for people to have employment. And today, nobody's going to go to Kashmir now, keeping this incident in mind. Amarnath devotees were going to go to Amarnath for their prayers and spiritually, but they're not going to be able to go there. How much are we going to tell our own forces to be more strong, be more this thing? This has to be coming from the top, that we feel secure, we feel, we feel secular in our country, and we will not see these kind of acts happening, is what I truly feel. Sir, don't you think that this is the all in all case being done in the behest of Pakistan, because Pakistan Army Chief some days back said that he was saying this language of divide and saying this thing that we will not sit ideal, and now what the intelligence agencies are saying that this can be the this is all being done on the behest of Pakistan and by Pakistan only. So do you want to say that this kind of atmosphere would whatever be the reason created in our country, it gives a green signal and a very heaven for these kind of terrorists who are, and especially the countries like Pakistan? I condemn this act. If within our country, if the minorities feel secure, if we do not use religion in politics, and if we find ways of uniting people and giving them work and keeping them in a progressive way, believe you me, no other bordering country will be able to act on us, or we would have this kind of terrorist acts on us if we are secure and we don't look vulnerable within our country. Communal disharmony will show vulnerability, divide, and that the acts of these things will occur. It can occur from everywhere. You know, and the whole country knows. From Sri Lanka, we had a terrorist whole act on Sri Rajiv Gandhi. That time also. So our borders are there. We do have, relationships. But when there's vulnerability, we'll have other sources that think their community is being suppressed, and they need to act on it. And the proof is why I'm not talking, other than proof that they're looking at IDs. Why are they looking at IDs? And why are they sparing other communities and not a certain community? Because they feel this disharmony is incorrect, and people who believe in a certain religion should be allowed to pray, and there should not be a disparity between, a certain religion on a festival can be on roads and do whatever they want. And when there's people praying in mosques and they have a spillover, which is on the roads, that's harmful, that's wrong. So these things people see around the world, which is unacceptable. But I will say again, my thought is very clear, that everybody, all parties must come together for this. Forget about any issues and talk about politics without using religion.
keep religion separate. A strong message should be given to Pakistan also. I would definitely say 100% our forces are strong enough. Our forces are strong to act on any kind of action that a terrorist act that it's a weak act. A terrorist act is a weak act, and our forces are strong enough to retaliate. Yes, they will retaliate. Yes, they will do a whole find out how did this happen, why did this happen, and yes, we will have to make a new way of being, having a border stronger, having ways that we find a stronger way that this act doesn't occur again. And yes, the government, central government must help the people of Kashmir, Jammu and Kashmir, because their rozgar, their, I think their earning would have come from this time of tourism. Now, because of this act, they are going to be jobless. And some way or the other, all this communal issues in our country has caused this also. So I would say, please give jobs to all the people in Jammu and Kashmir who are going to need the support of the central government. Secondly, keep religion away from politics. And yes, a strong message to Pakistan as well, that this will not be tolerated. And yes, we will fight back if any of this thing ever occurs. And my deep-hearted condolences to the people who have died and the people who are injured. I hope they recover at the earliest. I'm there to help in any way possible. My people will help in any way possible. And yes, I'm with a secular India, and I will go to a mosque, a church, a temple, or a gurdwara, and I'll say the same prayers that everyone should be secure, everybody should be healthy, and everybody should be one and together. Thank you. सर, कैसे देखते हैं आप जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, उस आतंकी हमले को उसके बाद किस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात की जा रही है? सरकार भी हरकत में है, नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं, उन्होंने भी गृह मंत्री से बात करी और सीधे तौर पर जो है भरोसा जताया कि हम राजनीति से ऊपर उठकर इस वक्त पूरा देश एक साथ। मैं दुख प्रकट करता हूं और जिन लोगों ने अपने प्यारों को खोया, गहरी निंदा है मुझे ऐसे जो आतंकवाद ने अटैक किया और 28 लोगों की मौत हुई, काफ़ी लोग घायल हुए। जो घायल हुए हैं, मुझे यही है कि वो स्वस्थ हों जल्दी से जल्दी, और मेरे तरफ से जो भी मैं कर पाऊँगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी जो मुद्दे होते हैं, जो टेररिस्ट, जो आतंकवाद हैं, जो सोच रहे हैं इससे उनके जो मुद्दे हैं वो उजागर होंगे, ये बहुत ही कमज़ोर तरीका उन्होंने अपनाया है कि जो निहत्थे लोग हैं, जो छुट्टी बनाने गए हैं, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, और कुछ फोर्सेस के लोग हैं, आईबी के लोग हैं, तो उनके ऊपर ऐसे वार करना बिल्कुल गलत है। मेरी संवेदना जिनकी जो लोग अपने प्यारों को खोए हैं, गहरी संवेदना उन लोगों के साथ है। 28 लोग मेरे ख्याल से हैं जो जिनकी मृत्यु हुई, और काफ़ी हैं जो घायल हुए हैं। अब मैं यही कहूँगा कि मुझे हमेशा लगा है, और ये मेरी सोच है, ना कांग्रेस की सोच है, ना मेरे परिवार की सोच है, कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, मेरा अनुभव है लोगों का, और लोगों से मैं सीखता हूँ, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों या अगर सिख हो या ईसाई हो, कि मैं उनकी बात हमेशा बुलंद करता हूँ। हाल ही मैंने दो हफ्ते पहले मैंने भी जो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, कि जब वो अपनी प्रार्थना करते हैं और अगर जाम मस्जिद में करते हैं और अगर बड़े तादाद में लोग होते हैं और वो बाहर रोड पे आना पड़ता है उनको, तो उनको रोक दिया जाता है या छतों पे रोक दिया जा रहा है कि आप यहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते, या मस्जिदों का सर्वे हो रहा है कि हो सकता है कोई मूर्ति मिल जाए या कुछ भी ऐसे हो जाए जो संभल वगैरह में हो रहा है। और अगर आप बाबर या औरंगज़ेब की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ को दुख लगता है, उनको दुख महसूस होता है, और ये जो इस तरह की ये राजनीति से
जुड़ा हुआ संबंध है कि हमेशा ये रोक लगाई जाती है, और धर्म और राजनीति को मेरे ख्याल से ज़रूर अलग होना चाहिए, क्योंकि जब भी ये होगा तो मुझे लगता है कि जो ये गलत आतंकवाद का अटैक हुआ है वो होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किन को उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहाँ से होता है? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, तो लोग ऐसे उठते हैं। तो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, बिल्कुल खिलाफ हूँ। और मुझे पता है हमारी जो फोर्सेस हैं वो एकजुट होंगे और ताकत उनको मिलेगी, या ताकत होनी चाहिए कि वो आगे जाके बॉर्डर और संभालें और अपनी कार्रवाई करें, और जो भी जहाँ भी सिक्योर कर सकते हैं उसको सिक्योर करना ज़रूरी है। पर जब तक हम एकजुट नहीं होंगे और हम लोग अपने देश के अंदर सेक्युलर नहीं होंगे, मुझे लगता है कि जो भी बॉर्डर कंट्रियाँ होंगी, देश होंगे, वो ज़रूर उस समय को गलत समय लेकर अपनी जो उनकी सोच है, वो सोचते हैं हमारी जो मुद्दे हैं, जो सोच है, वो और उजागर होगा अगर हम इस तरीके की एक्शन लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ भेदभाव की राजनीति से दूर होना चाहिए, धर्म की राजनीति से दूर होना चाहिए, और जो माइनॉरिटीज़, जो भी मुसलमान लोग हैं या जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, अगर वो अलग हो रहे हैं तो उससे हानिकारक है। एकजुट होने में ही हमारा फ़ायदा है, हमारी ताकत है। और भेदभाव नहीं होना चाहिए कि एक कम्युनिटी के लोग मतलब कि रोड पे उतर के अपना प्रचार कर सकते हैं, जो भी उनकी सोच है, जो भी प्रार्थना है, वो रोड पे उतरते हैं, और कुछ लोगों को रोका जाता है। तो दुनिया देखती है, वो भी खुश नहीं है कि इस तरीके की जो अटैक हुआ है, आतंकवाद का अटैक हुआ है, ये गलत है। जहाँ भी ऐसा होगा लोग डरे रहेंगे, और मैं ये कहूँगा कि फ़ायदा नहीं होगा, प्रगति नहीं होगी उस देश की, उस जगह की। मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर इतनी सुंदर जगह है भारत में, वो एक जगह है, बहुत जगहों में से एक जगह है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और लोग, ये समय था कि लोग शादी करने के बाद या अपने गर्मी के से दूर रहने के लिए वहाँ जम्मू कश्मीर जाते हैं अपने छुट्टियों के लिए। अब छुट्टियाँ, वो निहत्ते लोग हैं, छुट्टी पे गए हैं, उनके ऊपर ऐसा एक्ट हुआ है जो मतलब कि बहुत ही गलत है। दुख होता है मुझे ये देखकर, और मुझे लग रहा है कि वहाँ के जो नागरिक हैं, जो अब उनकी रोज़गार टूरिज़्म से है, अब उनकी रोज़गार में भी परेशानी आएगी। तो मैं कहूँगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको जितने भी वहाँ के नागरिक हैं जो बेरोज़गार होंगे, उनको सहायता देना बहुत ज़रूरी है। और आप देखेंगे अभी उस तरफ ये जो धार्मिक भी दौरा होता है सब लोगों का, अमरनाथ यात्रा होता है, तो उसमें भी बाधा होगा। तो उसमें भी हमें देखना है कि हम कैसे सुरक्षित रहें, कि अगर हम अपनी प्रार्थना करने जा रहे हैं, और हमारे जो सुरक्षा बल है वहाँ, मुझे पता है कि वो और मजबूत होंगे अब, और सोच और सतर्क होंगे वहाँ, कि मतलब कि यहाँ दोबारा ऐसी घटना ना घटे। और मेरी विनती यही है कि धर्म और राजनीति को अलग रखिए और एकजुट रखिए, सबको अलग अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश कहीं भी होता है वो वार तभी करेगा जब हम एकजुट नहीं हैं। और सारी पार्टियों को अपने जो भी सोच है, अलग सोच होती हैं, ठीक है, पर एकजुट होकर हमें इसका सामना करना है, और पाकिस्तान को भी बहुत ही कड़ा जवाब देना है। और ये चीज़ हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम इसके खिलाफ हैं और लड़ते रहेंगे इसके खिलाफ, कि अगर ये दोबारा होना नहीं चाहिए। पर मैं कहूँगा कि जब हम एकजुट होंगे और मजबूत होंगे, किसी में हिम्मत नहीं होगी कि हमारे साथ हमारे लोगों को, निहत्ते लोगों को ऐसे जुर्रत कभी भी मारने की या कभी भी ऐसा अटैक करने की। तो मेरी विनती यही है कि
मेरी गहरी संवेदना है जो 28 लोग मरे हैं उनके परिवारों के साथ, और जो घायल हैं कि वो जल्दी ठीक हों। अगर मेरे से कुछ भी हो पाएगा, कुछ भी सामग्री या कुछ भी दे पाऊंगा, मैं ज़रूर भेजने के लिए शामिल हूँ, तैयार हूँ। और मैं फिर भी लोगों के लिए अपनी बात रखूँगा, उनकी बात बुलंद करूँगा। जैसे मैंने कहा, चाहे आप मुझे ईडी के पास भेजो या कहीं भी भेजो, जो भी गलत अत्याचार हो रहा है हमारे देश में, चाहे मणिपुर हो या कहीं भी हो, मैं उसके खिलाफ हूँ और मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊँगा लोगों के लिए। धन्यवाद।